Hello and Swadika. Welcome to a brand new episode of Zee Connect Season 6 with me Priya. और आज मुझे बड़ी थाईलैंड वाली फील आ रही है obviously because हम आज शूट कर रहे हैं at the Royal Buddha Restaurant at Holiday in बर्शा. और आप देख ही सकते हैं यहाँ के इंटीरियर्स कितने अच्छे हैं. मेरे पीछे एक बुद्धा का फिगर है जो बहुत प्रिटी है. तो शुरू करते हैं इस वीक का एपिसोड with a lot many exciting updates for you. So, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स, लेकिन उससे पहले सवाल ऑफ द वीक. तो आज का सवाल फैशन से रिलेटेड है और आई एम श्योर मेरी तरह आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें ये टॉपिक बहुत पसंद है, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए. So well, the question is that there's a luxury brand designer who started designing at a very early age. In fact, उन्होंने 5 साल की उम्र से डिजाइनिंग शुरू की. Like I said, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा सोचिए. ये बैग्स भी बनाते हैं, वॉचेस भी बनाते हैं, and dresses also. So take some time. I'll come back with the answer. Well, since we've started talking about fashion and it happens to be my favorite topic too, let's take you to the first story of the week, which is the preview of iconic Spring 2017 collection. तो चलिए आपको दिखाती हूँ आने वाले सीजन की शॉपिंग कहाँ से करनी चाहिए. Let's take a look. Big event at Iconic for the Dubai Mall, and I'm enjoying it very, very much because Iconic is always unique and they bring out the best in every collection. I love how comfortable it is. I love how street style it is. It's major street style and it's so chic. I love the new collection. No wonder why it's always successful. Iconic is always the best. Thank you so much. Welcome to the Iconic Press Day. Today we are celebrating the Spring 2017 collection. Most of the collections are limited edition collections which should disappear from the shelves within 7 to 15 days. So do come and shop. We have some amazing collections. All the global trends from the boho to the nauticals to the luxe sports, the nomadic, all the collections are here. I've just reviewed the collection. They're looking absolutely stunning. Hello guys and welcome to Iconic, the new reveal of the new collection here. Everyone, really, I'm an Iconic-aholic. So please come, see, explore, and let me see you wearing Iconic. And if you want this jacket, it's here also. See you guys. कैसा लगा कलेक्शन? Awesome, isn't it? Well, शॉपिंग की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, so take a break and come back for more. Welcome back. Like I said, I'm on a shopping spree. और बड़े दुबई में रहने वाले लोगों के लिए मेरे पास है एक good news. The Fatima Group has recently opened its largest hypermarket in Dubai. तो आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें, right from electronics to household appliances to makeup products, जो आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं. Let me take you to their launch event and also show you some glimpses of the store.
Mr. Haji Musa is the chairman of the company. He started this business in 1973, opened the first supermarket in Abu Dhabi, and since then, 45 years later, he has grown this Fatima Group into 30. This is the 33rd store. We are opening 4 more in the next 2 months. One in Sharjah, one in Ras Al Khaimah, one in Jeddah, and the 4th one in India. So with that, we will have a total of 37 stores. This particular store in Dubai is 35,000 square feet in area, and it is our first major hypermarket in Dubai. Most of our stores in Abu Dhabi and Al Ain and in Northern Emirates. So this is our first major store in Bar Dubai. बट शॉपिंग लिस्ट तो रेडी हो गई, अब आगे बढ़े. सो टेल मी, डू यू बिलीव इन मिरेकल्स? कभी ना कभी हम सब अपनी लाइफ में चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए. समटाइम्स वी रियली वांट समथिंग, लेकिन किस्मत हमारा साथ नहीं देती. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस गर्ल हेलन केलर, who was deaf and blind from a very early age, and she needed a miracle to rescue her from the darkness in her life. और ये miracle कर दिखाया उसकी टीचर एनी सुलिवन ने. Wait, why am I telling you all this? Well, इसीलिए because recently a play called The Miracle Worker was staged on their story at DUCTAC Mall of the Emirates, and I'm taking you straight to meet their director and some of the lead actors. Let's go. Welcome Myra and Priyanka to Zee Connect Season 6. Thank you. Happy to be here. Great. Okay, so you have been rehearsing for The Miracle Worker. So tell me, starting with you, Myra, tell me a bit about your character. You're playing quite a crucial character in the play. I play the character of Annie Sullivan, and she is the teacher of Helen Keller. And she did wonders with this child and how to teach her sign language, and to get a blind and deaf girl to speak with her hands was something amazing that she did. And yeah, so you had been reading about her, and so you... Yes, well, in college in Bangalore, we had done a course where it was called Rehabilitation Science, and we get to work with children who are blind and deaf, and I did get to learn the language, sign language a little bit, the Braille language. So when I did see the audition for Miracle Worker on Facebook, it was something that I wanted to audition. I don't normally act, but this was a play that was very close to me, since I have worked with children and I have seen how difficult it is for them. So when I saw this piece, and definitely Jimesh was directing it, it was become easier for me because I knew Jimesh from the past year, so it just everything fell into place. Priyanka, tell me about your character. Well, I play Helen Keller's mother, Kate Keller. And like Myra said, this play is very challenging. I have not worked with children before. So for me, it was not only do I have to play Helen Keller's mother, a regular child's mom, but it's Helen Keller. And everything has been like, this journey has been absolutely fantastic in a way. In the play, Annie is Kate's last hope in a way to help with Helen, because no one else understands that except for Kate. So the bond that Annie and Kate share is actually quite special. Myra, tell me one of your best moments of working on this play. Well, definitely working with Meher Tucker, who plays Helen Keller. Working with Meher like as Helen, just because the scenes are so intense and we're not used to it. So it takes a while, you know, with because Helen has a lot of tantrums. Helen has, you know, she's a difficult child. So just to bring that on, it took a couple attempts for us to get there. Thank you so much. Thank you for being on the show. Thank you for having us. Welcome Vardhan and Sonal to Zee Connect. Hi, thank you. So you guys have to firstly tell me about your characters in The Miracle Worker, starting with you, Vardhan. Well, I can start with describing James Keller as the evil prince of the Keller homestead. He is the worst person to be in any situation. Happy, sad, chaotic, worst person to be around. He doesn't get chances to express what he actually feels against each member of the family. And I guess
everyone in the family gets surprised by what he does, what he says. So no, you play Helen's aunt in the play. Yeah, Tell us I'm about that. Captain Keller's sister. So that's Helen's aunt Ev. So she is the person who's the main influencing factor in getting the teacher on board. She's been with the family for years. She's seen what they've gone through since so many years. So she really is very sympathizes with the family and is concerned. So because of her love and concern for Helen Keller, she supports Kate in bringing the teacher on board. I'm sure you guys will get a lot of opportunities on the way. We wish you all the best. Yeah. Thank you so much for being on our show. It was a great pleasure talking to you. Same here. Thank you so much. Welcome Jimish and little Meher on Zee Connect. Thank you for having us. So Jimish, you are the director, the creator of this play, The Miracle Worker. Firstly, tell us a bit about the play. The play is phenomenal. The theme of hope and persistence, and I haven't heard a better story of hope and persistence. And I believe that in our journey, I think those two values are penultimate. To be able to succeed and to be able to achieve excellence. So when and then this is phenomenal, and this talks about hope and persistence through the efforts of a teacher who is working with a child who is blind, who's deaf, and who's mute. So it can't get more dramatic than that. And you have your daughter Meher playing the lead role, the role of Helen. Yes. Yeah. Meher, tell me, how has been the whole experience of working on this play? Oh, it's wonderful. I just love the character, Helen. It's just inspiring how she learns this language, or this. It's just so mesmerizing or magical. What kind of training did Daddy put you through? Well, first of all, he told me to think. Okay, think that this is a whole new world. You don't know anyone. It's totally black. You can't hear anyone, you can't see anyone, and you don't know anyone. How would you be? So, yeah. Yeah, that's how it started. And was it difficult in the beginning? Yes, it was a little difficult in the beginning, but then I got adjusted to it. Since the play is also based on what Black was based on, what is really different apart from the obvious, which is that is a movie, this is a play? Yeah. What is going to be different about The Miracle Worker? So the difference is that in the movie Black, they were dealing with two circumstances. One is the circumstance of the child, who's the blind, the deaf, and the dumb. And then, of course, the second one is the teacher himself, who was played by Amitabh Bachchan. The second part of the movie talks about him and his Alzheimer's, and then how the student becomes the teacher. So the movie went that far. In the play, we're not going that far. We are sticking to the subject of just her and the teacher, and then how we connect her back to some sort of a level where she's able to then find her feet, recollect the first few words she spoke 10 years ago when she was a year and a half, and then take it one step at a time and try and catch a hold of life. So Jimish, you have been this versatile. You've been acting, you've been directing plays, you have also taken up comedy, you've been a stand-up comedian. What has been your true love? Theatre. Theatre. On stage with the lights on. This is lovely. I'm living my dream. Great. Thank you so much for being on the show. Thanks for having me. It was a pleasure talking to you. Thank you. Thanks. पर किसी ने सच ही कहा है, अगर विश्वास हो तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं. Well, on this positive note, take a quick break and come back for more updates. Stay tuned. Welcome back. टाइम हो गया है अपने फ्यूचर के बारे में कुछ जानने का. So for those of you जिन्होंने last week अपने 2017 फ्यूचर के बारे में नहीं सुना, Dr. Sundeep Kocher will tell us this week about 3 more zodiac signs. So let's begin our session with him. So we are back this week with celebrity astrologer Sundeep Kocher, जिनके बारे में हमने आपको पिछली बार बताया था कि वो एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ एक पोइट भी हैं, एक्टर, एंकर, ऑथर भी हैं, और हाल ही में हमें ये भी पता चला है कि वो एक क्रिकेटर भी रह चुके हैं. इनफैक्ट उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ कुछ मैचेस भी खेली हैं.
तो चलिए उनसे पता करते हैं बाकी के साइंस के बारे में क्या प्रेडिक्शंस है 2017 की। संदीप जी, वेलकम अगेन टू आवर शो। थैंक यू प्रिया। तो चलते हैं, अब हम जानते हैं बाकी के 3 साइंस के बारे में इस हफ्ते। संदीप जी, टेल अस अबाउट कैंसर। क्या प्रेडिक्शंस हैं 2017 की कैंसरियंस के लिए? देखिए, कैंसरियन दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल। मैं ब्यूटीफुल कभी भी लुक से नहीं कहता हूँ। दे आर ब्यूटीफुल, दे कैन बी ब्यूटीफुल और हैंडसम, बट दे आर ब्यूटीफुल फ्रॉम हार्ट। यू नो, सबसे केयरिंग और काइंड अगर कोई है तो उनके कैंसरियन के मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ना उलझें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि बहुत लंबी पिक्चर हो चुकी है आपकी, मैं ये कह रहा हूँ कि पिक्चर अभी शुरू होने वाली है। स्पेशली सितंबर से द ट्रांजिशन ऑफ राहु विल अफेक्ट यू फॉर 18 मंथ्स। तो यहाँ पे अभी से आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी को एनहेंस करना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, ट्राई टू बी इन ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे कैंसरियंस जो शादी करना चाहते थे उनकी हो गई, और अभी भी 8 महीने आपके पास हैं। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस यू माइट गेट मैरिड। तो अभी सब कुछ ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ज़रूर स्ट्रेस देती हैं, वो तो आदत हो चुकी है बेरुखी की तेरी, अब मोहब्बत ना कर बिगड़ जाएगी आदत मेरी। ये गुस्से में सुना रहा हूँ। तो वो यू नो दे आर यूज्ड टू दैट। कई लोग कहते हैं नहीं, आई एम हैप्पी, बिकॉज उन्होंने अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया है। तो आई थिंक 2017 में आपको मैं ज़रूर एडवाइस करना चाहता हूँ, यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। दूसरों के लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम यू नो विद इन योर सेल्फ। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो एटलीस्ट पहले अपनी हैप्पीनेस, ट्राई टू फॉल इन लव विद योर सेल्फ। बिलीव मी, 2017 विल प्रॉमिस लॉट ऑफ गुड थिंग फॉर यू। As you very rightly said, I think it's one of the most important things is to love yourself. Correct. So वो सबसे पहले करना चाहिए हमें। So we wish the Cancerians all the best. और आगे बढ़ते हैं हम अगले साइन की तरफ, जो है लियो। लियोज आर ऑलवेज किंग, दे आर बॉर्न लीडर्स। लेकिन हुआ क्या, उल्टा। पिछले जनवरी 2016 से दे आर नॉट इन ए वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, और उनके लिए मैंने ये लिखा, और उनको आई थिंक वो भी इससे कनेक्ट कर पाएंगे इस बात से कि रफ्तार ज़िंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं। यानी उन्होंने इतनी दौड़ भाग करी, इतनी मेहनत करी, लेकिन वो कहीं पहुंचे ही नहीं, बिकॉज इट वाज नॉट ए वेरी ग्रेट टाइम फॉर लियोज। और ये थोड़ा सा भी 6-7 महीने का बात है, इसको वक्त को गुजर जाने दीजिए, बिकॉज एज आई ऑलवेज से नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ बट चेंज। सो चेंज विल कम टू यू फ्रॉम सेप्टेम्बर बेसिकली। एट द सेम टाइम देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ ट्रैवलिंग। तो आई थिंक लियोज दे आर फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज उनको क्या एक जगह रुकना पसंद नहीं है, दे ऑलवेज फील स्टैग्नेटेड। तो वो एनर्जी इतनी है, दे नीड टू बी ऑक्यूपाइड, दे नीड टू बी डूइंग समथिंग डिफरेंट। ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द की थिंग फॉर देम। सो आई थिंक ये बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज आपका खुद का स्टेट ऑफ माइंड जब नेगेटिव था तो आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, उसने कुछ कहा आपको कुछ लगा, उसने मजाक किया आपको लगा मजाक उड़ाया। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 1 ईयर। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रूर एडवाइस करना चाहता हूँ, ठीक है 26 जनवरी यहाँ से आपका जो शनि का ढैया आपका भी चल रहा था वो ओवरकम कर जाएंगे, यू विल फील बेटर। थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी प्रेयर, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, बिलीव मी इट विल बी ए ब्यूटीफुल लाइफ। एंड 2017 में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसका इंतजार आप पूरे 2016 में करते रहे। आई विश यू गुड लक। अब अगला साइन जो है वर्गो, उसके बारे में बताइए, 2017 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्गो? 2017 आपको बहुत कुछ ला कर देगा, और यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि थोड़ा रेस्टलेसनेस आपका था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। शनि का ढैया भी आपका अभी शुरू होने वाला है इन फ्यू डेज नाउ फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी, और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्टलेसनेस बढ़ सकता है। यू नो, जो सुकून वैसे ही आपको नहीं रहता, और सुकून की तलाश करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। फॉर योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड ट्राई टू इग्नोर थिंग्स, बिकॉज ज़िंदगी इतनी ज़्यादा भी पेचीदा नहीं है, संजीदा नहीं है जितनी वो लोग बना देते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने शादी अगर करना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा वर्गोज़ को शादी कभी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अपने साथ साथ वो दूसरे की ज़िंदगी भी को मुश्किल में डाल देते हैं, बट दैट इज़ ऑल राइट। अब किसी की किस्मत में लिखा होगा कि यू नो थोड़ी सी लाइफ मुश्किल होने वाली है, तो ऑब्वियसली शादी तो उनकी भी होगी। तो वक्त चल रहा है, शादी कर लीजिए, बट थोड़ा सा इग्नोर करना, दूसरे को स्पेस देना, ये आपको मैं एडवाइस ज़रूर कर सकता हूँ। Rest everything is beautiful, especially from August and September. You will feel lot of good things happening around you, and you might get lot of unexpected gains as well. थैंक यू संदीप जी। तो जैसा कि संदीप जी ने कहा, जिन लोगों का साइन वर्गो है उनको थोड़ा सा लाइफ लाइट लेनी चाहिए, थोड़ा इजी गोइंग हो जाइए, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2017 इज़ गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। So thank you Sundeep ji for being on the show today, and we are going to get back next week to know more about the rest of the signs. ये था फोकस कुछ लोगों के 2017 का, बट फॉर द रेस्ट ऑफ यू फिकर नॉट, आपका नंबर भी जरूर आएगा। सो टाइम टू से बाय बाय, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते के सवाल का जवाब। So the question was, who is this luxury brand designer who started designing at the age of 5? Well, the answer is Michael Kors. Well, he designed a wedding dress for his mother at that age. Isn't it amazing?
आज का एपिसोड आपको कैसा लगा लिखते रहिए, मैसेज कीजिए, ट्वीट कीजिए, do whatever you want, but stay connected with us on our Facebook page or our Twitter handle. So this is me, Priya, saying see you next week with many more exciting updates on Zee Connect Season 6.